my brief introduction, my name is Atif Zamurrad Malik, and I'm a partner in KPMG Islamabad office. I've been with KPMG for the last now 24 years, and I'm currently as a partner, and also I'm head of the technical department of the firm, and also I'm also part of a couple of the ICAPs committee. So after a brief introduction, let's just move towards the topic of the day. It's IFRS 13, fair value measurement. Just to give you a brief background of the standard, why this standard came in. Prior to this standard, the fair value concept that was not very clear, and every standard have its own kind of a little guideline on how to measure and record the fair value. And also the definition was a bit of confusing. So then ISB thought of having a standard which serves as an overarching standard as an aid to the other standard where there is a concept of fair value. So there are many standards that actually require measurement of the fair value and disclosure of the fair value. So the scope of the IFRS 13 is basically to deal with the situation where other IFRS, not this IFRS, requires or permits the measurement or disclosure of fair value. It applies to fair value on initial recognition and also on the subsequent recognition of the fair value. अब इसके स्कोप में बेसिकली क्या है, जस्ट अ ब्रीफ ब्रेकडाउन. लाइक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40, when you require your investment property to be recorded at fair value, तो आपको fair value measurement की जरूरत पड़ती है. But even if under IS 40 you need, if you're carrying your investment property at the cost, then you still need to be disclosing your fair value of the property at the measurement date. So this standard comes in whenever there is a measurement and a disclosure requirement of the fair value. Biological asset IS 41 requires biological asset to be measured at fair value as possible. Property, plant and equipment, like there is a model in the IS 16 that allows you to recognize the PP of the company at revalued amount less subsequent impairment or depreciation. So in that case, the revalued amount is initially whenever there is a revaluation, the value at which the amount is to be recorded or the assets carrying value to be determined is determined under the scope of standard, which is IFRS 13. That's the fair value. Again, the intangible assets, IS 38 can be there with two different models. So if there is a readily active market for the intangible assets, you can measure the intangible assets at the fair value. And when you measure the assets at the fair value, then the requirements of this standard comes in. And also the disclosure requirement. So these are the requirements where the standard caters both a measurement, so measure कैसे करना है, and also what kind of disclosures that are required to be there to be presented in the financial system. It also caters that. Again, all IFRS 5, it again whenever you carry an asset at held for sale and change its presentation from a non-current asset to current asset, जहाँ पे मैनेजमेंट ने उसको इसकी either sale हो चुका होता है, but this was not complete, or the management thinks that the sale would be completed in the next year, so that is carried at in the current asset. And also the IFRS 5 then required to record the asset as the non-current asset held for sale, उसकी measurement हुई है, classification हुई है, to be carried at the lower of its carrying amount or fair value less cost. So again, this standard comes in. And also one of the largest standards, one of the most complex standards, that is IFRS 9, which deals with the financial instrument. It has many requirements of measuring the financial assets and financial liabilities at its fair value. So IFRS 9 almost requires all of their assets to be required to be carried at fair value, at least in the initial recognition, other than the trade debts. So वहाँ पे भी फिर IFRS 13 की requirements आ जाती हैं, how to determine the fair value of those financial instruments. So there
there are certain particular standards जहाँ पे measurement might be similar to the fair value, but those are out of the scope of the IFRS 13. जैसे IFRS 2 के अंदर share based payments हैं, those are actually out of the scope of IFRS 13 because IFRS 2 requires you to record the share based payment or the staff the employee vested rights or non-vested rights in a particular manner. So IFRS 2 can allow. Similarly, IFRS 16 deals with the leases. Again, ROU assets or the lease liabilities at initial recognition and also on the subsequent recognition. Those are required recognized under IFRS 16. Also, there are certain provisions that are measured particularly or similarly as a fair value would have been measured. जैसे fair value measure की जाती है तकरीबन उस तरीके से उसको measure किया जाता है with some kind of variant, but चूंकि उसका particular method to record or recognize is there under I-37, so those are not then covered under I-37. And again, there are a couple of measures which are almost similar to the fair value, but they are all they're not covered in the fair value under IFRS 13. Like अगर आप इसको देखा जाए तो ICE 2 के अंदर inventories are required to be recognized at lower of their cost and net realizable value. And net realizable value is estimated selling price less cost to complete. So the concept is almost like a fair value, but that since the particular method of calculating that NRV is described in that standard IS2, that is not covered in IS2. And again, IS 36 में जहाँ पे आप वैल्यू जो डिटरमिन करते हैं to calculate whether there is any impairment that is required to be recognized against non-financial assets. That concept is pretty much similar to what the fair value would have been, but since it has certain particular entity level consideration और वो उसका मेथड भी IS स्टैटिस्टिक्स के अंदर दिया गया है कि किस तरीके से आपने कैश फ्लो डिटरमिन करने हैं, what kind of thing that you should take care of, what kind of discount that should look into, what kind of cash flows that you will be looking at. So the method is pretty similar again, but since it is not the fair value under IFRS 13, so that is not covered. So in the previous two slides, initially we discussed कि वो कौन से financial assets हैं जो measurement and disclosure में IFRS 13 इनको cover करता है. Then again we have covered कि यहाँ पे IFRS 13 measurement requirement that might be similar to fair value जहाँ पे IFRS 13 लगता है. But there are other certain standards जहाँ पे IFRS 13 standard requires you to be record those assets at the fair value, but IFRS 13 उसको completely cater नहीं करता. Like for example, IS 19 के अंदर employee benefit assets जो हैं plan के assets. If you have a provident, if you have a gratuity fund, if you have a pension fund, so जो pension fund के assets हैं, those are required to be carried at the fair value. But in that case, you will be requiring recognizing that asset under IFRS 13. लेकिन उसकी disclosure requirements हैं जो थोड़ा सा आगे चल के will be discussing it and touching the topic in a bit of more detail. वो disclosure requirement लगती नहीं है, but measurement would be similar to the method that are given in IFRS 13. Similarly, again IS 26 के अंदर भी there are requirements because investment fund के जो assets होते हैं या staff benefits के assets हैं, those are required to be carried at the fair value. Fair value is determined under IFRS 13, and again, but disclosure is not done. And again, IFRS 3 के अंदर भी there are multiple requirements जहाँ पे आपको fair value of identifiable assets and liabilities को record करना है in case an entity has acquired a business. When you have acquired a business, then the measurement requirements to measure the fair value of assets and liabilities under IFRS 3 would be similar to or would be the same जो कि IFRS 13 के अंदर दी गई. लेकिन disclosure IFRS 13 जो require करता है वो उतनी डिटेल के अंदर नहीं दिए जाते, required नहीं है to be given for a
business combination acquisition method under IFRS. So we have generally covered the scope, what is covered in the IFRS 13, what is out of the scope, and what is covered only for the extent of the measurement. So again in the topic 2, what again जैसे standard का नाम is the fair value. So before we move forward in the standard and before we start to apply the standard, it is very important to understand what is a fair value and how the fair value would be determined. The definition of the fair value is pretty much cleared in the sentence. Is the fair value is the price received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between a market participant and the measurement. So if you dissect this definition a bit more, it says the fair value is the price received, not paid, the price received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants. So it's a price for selling an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. That means to say that the fair value is something that is not constant. Fair value can change as the perception of the market participant change or the conditions of the market change. And if you determine the fair value, let's suppose on 31st March, the fair value could be one amount, and then you determine fair value at the reporting date, like 30th June, it would be it might be different. So the one of the participant has requested कि मुझे पिछली साइड इनको दिखाई जाए तो प्लीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट गोइंग बैक. Abid, this is the slide which you were looking for. आपका कोई क्वेश्चन है इधर, एनीथिंग दैट यू वांट अ फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन, और शुड वी मूव फॉरवर्ड? So moving forward again, just sorry to let the flow of it go. Basic definition is we have discussed, and again it's very important to understand that fair value is an exit price. That means to say it is from a perspective of the holder. कि holder को कितनी price मिलेगी to sell an asset and to transfer a liability, but it does not mean कि जो holder चाह रहा है वही price ही is a fair value. The fair value is an exit price. It is a price to sell an liability, transfer liability to another party. It is not an entry price. That means to say if I am a buyer and I buy, let's suppose, a land at a particular date, so it is not necessary कि वो जो price है that would be its fair value, because if we go up, the fair value is price to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction. So if I purchase an asset, हो सकता है कि वो जो seller है is working in a distressed situation, जिसको मैंने उसे bargain किया, तो वो that price is the exit price. So Ali, we'll just move to your question a bit later. थोड़ा आगे अपडेट valuation approach को discuss करेंगे, तो we can just and also it is the fair value is on the market participant. एक market participant, how would the market participant would be willing to pay for that and for this asset को खरीदने के लिए और transfer liability. So it is a मतलब ये concept थोड़ा सा theoretically a bit difficult to understand, but it is a very crux of the IFRS.
That means to say कि whenever आप जब भी fair value की बात करते हैं, that is from the market participant. तो market में एक purchaser है, he knows everything about the asset and he is willing and he is motivated and he is not under any coercion. So that means to say फिर वो कितना उसके लिए पे करेगा. So that is a fair value construct basically. Again, it's a market-based measurement. Fair value is based on market information. It's not the entity specific. Like for example, uh, if I am मैंने एक एसेट खरीदा हुआ है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, and the market says its value is might be different to the value which I am selling. Like अभी एक participant ने for sale value की बात की. If I mean मेरे पास एसेट है और मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हूँ, मुझे पैसे चाहिए, आई एम लिक्विडिटी पर, तो हो सकता है कि मैं उस एसेट को जबरदस्ती आज बेचने की कोशिश करूँ. And obviously when I will be selling it on a expedited manner, उसको मैं जल्दी से बेचूंगा तो वैल्यू वो नहीं मिलेगी. It can be a for sale value. But if the transaction is given a due time, market participant से आप interact करें तो you might be getting a value that is higher than the for sale value. So for sale value then is not a fair value that you will be getting. Fair value is a value which is against any distress, किसी भी force के बगैर, किसी भी coercion के बगैर, जो एक ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी को मिलेगी, दैट इज अ फेयर वैल्यू. And again, as I was saying, it's a value that is in the orderly transaction. Mean to say कि in distress or force liquidation के अंदर जैसे भी एक पार्टिसिपेंट ने यहाँ जो forcible value भी होती है, that is actually not a fair value. Fair value is a value that is जिसके नाम से ज़ाहिर है कि which is actually fair without any a kind of other motive. अगर आप पुराने स्टैंडर्ड में भी जाएं तो it was like जो एक टर्म यूज होती थी, that is the arm length transaction. The two parties they are negotiating at an arm length without any kind of other motive. So that is the value that would be a fair value in an orderly transaction. As you just said, orderly transaction के लिए market participant का होना भी जरूरी है. And what kind of characteristic that the market participant should have for a transaction to be an orderly? And if an orderly transaction, then it will lead to be the price that would be paid. Means that the party should be willing. They are willing to enter a transaction for an asset and liability. In other words, they are motivated, but they are not forced or otherwise compelled to do that. तो पीछे बात है, वही बात आगे इसको थोड़ा डिटेल में explain किया है. They are knowledgeable. That means to say the parties knows about the asset, about the liability, what kind of characteristics does the asset have, क्या restriction हो सकती है. They have a reasonable knowledge about the asset. क्योंकि if the market participant do not have a knowledge about the asset, कि इसकी earning capacity क्या है, इसकी physical condition क्या है, let's suppose, they will always end up, there's always a risk of having them ending up in a price situation which is either lower than the price that asset should be carrying or the higher the price ज़्यादा होने का भी चांस हो सकता है, कम होने का भी चांस हो सकता है. तो standard actually says the party should be willing and knowledgeable and able. Able means to say they are able to enter a transaction of the assets and liabilities. That means they have the ability, they have the financial resources at the hand to carry out these transactions. And the last one is they are independent of each other. That means to say if I am selling an asset to my related party, then you cannot say it's an orderly transaction, because whenever I'm dealing with a related party, there is always a motive of certain related party consideration that might come.
So again, just a quick question from the participant. Do the transaction between related party as defined in IS 24 related party transaction qualify as a transaction between market parties? So the answer we have just given that it is actually yes or no. No. So market participant must, as I just said, must be independent of each other. However, the price in a related party transaction may be used as an input to fair value measurement if the entity has an evidence that the transaction were entered on a normal time. ठीक है, again if we relate to couple of slides back, जहाँ पे हमें बात की कि fair value is always determined from the perspective of the market participant. जब मार्केट पार्टिसिपेंट की बात आती है तो देन एक सवाल अराइज होता है कि कौन सी मार्केट की बात करें. What is the market that we take into account? Let's suppose I have an asset, I have a car, and I live in Islamabad. But there are markets for trading of cars in Lahore, Islamabad, Karachi, Rawalpindi, all of that. So for me, I'm living in Islamabad. मैंने fair value determine करनी है for my car. So what would be the most relevant market which जहाँ की price में I'll take into account while determining the fair value of the asset or liability which I have. तो IFRS 13 इसके अंदर दो चीजों की बात है. The number one it says it's the principal market in which you are trading it. That means to say the fair value measurement assume the transaction to sell the asset to transfer takes in the principal market for assets and liability. Principal market means कि वो market जहाँ पे सबसे ज़्यादा transaction है. If I do not have a principal market, then I'll look into it. कि कौन सी market ऐसी है which is the most advantageous to me. फिर मैं उसकी fair value. Let's suppose जो मैं आपको example दे रहा था कि if I live in Islamabad and I say that I have a car market couple of kilometers away from my house. बट वहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं होती है. मतलब ट्रांजैक्शन जो मेरे पास पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कार्स है वहाँ पे उसका कोई बायरेज नहीं है. वहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन लेट्स सपोज 3 महीने में 4 महीने में एक हजार. So that means to say कि it's not a principal market for me, but I need to determine the fair value. तो सवाल ये अराइज होता है कि मैं फिर कौन सी मार्केट देखूंगा तो जहाँ से मैं अपनी वैल्यू डिटरमाइन. देन I'll start looking at it. देन ऐसे कि यार रावलपिंडी के अंदर लेट्स सपोज इज अ मार्केट जहाँ पे इस ब्रांड और मॉडल की गाड़ी की ट्रांजैक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस होती है. So this is a principal market. But if I say कि रावलपिंडी के अंदर भी नहीं होती, then I look into, then रावलपिंडी will not be the principal market. But then I look into it कि यार चलो लाहौर में होती है and लाहौर के अंदर it is something जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस है. So that will become a most advantageous market. तो मेरे पास अगर principal market नहीं है, then I look into the most advantageous market जहाँ से price determine करके मैं उससे value determine. But the basic premise is that for every principal and for advantageous markets आपके पास access होनी चाहिए. If you do not have an access to a market, then you cannot say that the fair value आप उस market के reference से fair value से determine करें. अगर मैं उसी गाड़ी की example दूँ, let's suppose I have a car which is very antique. आज से 60-70 साल पुरानी है and it is a very vintage car. But in America, somewhere in America, there is a market for that car. Pakistan के अंदर there is no one buying or selling that. But there is a fair value market in United States. जहाँ पे transaction. But to start the concept, it is then become
the most advantageous principal market for me. लेकिन फिर अगला सवाल अराइज होता है, do I have an access to that market? Will I be able to transport my car to that market to be able to sell it? So in that case, आपको मार्केट भी देखनी है, then you need to say कि उस मार्केट में आपका एक्सेस भी है. So if you don't have an access, then you cannot take a relevant price for that market. Then अगर आपके पास एक्टिव मार्केट भी नहीं है, आपके पास एडवांटेजेस मार्केट भी नहीं है, then standard becomes a bit complex and as we go forward, वहाँ पे फिर हमें कुछ वैल्यूएशन टेक्निक लगा के assumption लगा के फिर उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ती है कि अच्छा एक मार्केट में ये है तो वहाँ पे एनोलॉजी ड्रॉ करके कि पाकिस्तान की मार्केट में या मैं जिस मार्केट में मैं बैठा हूँ वहाँ पे उस मार्केट की वैल्यू प्राइस करें. And again, there are two concepts. There are certain types of costs that you can or may incur. जो आप प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में ट्रांजेक्ट करते हुए इनकर करते हैं. वन इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. द क्लियर कट एग्जांपल इज दैट कि अगर आप किसी शेयर में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एंड यू आर ट्रांजेक्टिंग विद अ ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, तो ब्रोकर आप जो भी आप सेल परचेज और शेयर करेंगे, broker will be deducting a certain amount as its commission. So that can be a transaction. What is the transport cost? Transport cost ये है कि जैसे भी हमने बात की, so let's suppose I have a vintage card and very valuable, and it has a market in USA, and I say कि अच्छा मैं उसको अमेरिका भेज दूंगा, so then I'll be able to get a handsome amount of money. So that is a transport card. Transport cost होगी जो मुझे यहाँ से लेकर उसको अमेरिका भेजने के लिए इनकर करनी है. Then आपके जहन में सवाल होगा कि why are we discussing these kind of costs? Because अभी अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि there are ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के अंदर से एक कॉस्ट ऐसी है जो हम फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन में कंसिडर करते हैं और एक कॉस्ट ऐसी है जो फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन में हम कंसिडर नहीं करते. When to consider the transaction and transport cost? So the entity need to consider transaction cost and transport cost and identifying the principal and most advantageous market. यहाँ पे उसका यूज होता है in measuring the fair value. When the market has to be determined, the measurement of fair value is independent different calculation. ठीक है. Number one is identifying the principal market. Principal market is there, and for the principal market, transaction and transport costs are not considered in identifying the principal market because such market is identified based only on the level of volume and the level of value. So if you have a principal market stock exchange है, वहाँ पे आपके शेयर listed हैं and you determine the price of the stock at a reporting date. So in that case, you will not be considering the transaction cost and you will also not be considering the transport. Let's suppose there is no principal market. Then you say कि मेरी फिर most advantageous market क्या है जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा benefit मिले. In determine इस concept को थोड़ा सा further भी कर सकते हैं कि let's suppose you have a stock market and you have a market for car in Islamabad, Lahore and Karachi. And लाहौर में X price है, कराची में X+1 price. But in Lahore you have a lower percentage of transport cost and dealer broker. कराची में थोड़ा ज़्यादा. तो नेट बेसिस पे you'll see कि आपको सबसे ज़्यादा फायदा कौन सा है. लाहौर में you're selling the cost to net proceeds आपको लाहौर में ज़्यादा मिल रही है, कराची में ज़्यादा. So when you are identifying the most advantageous market, primary जब आप principal market की बात करते हैं, वो if you're able to determine, then obviously second search you need not to do. If you're not able to find the principal market, then you say कि the most advantageous market ये है,
और यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा नेट प्रोसीड कहाँ पे मिलेंगी, which is the then it will become a most advantage. And the third is the measuring fair value. Fair value के अंदर transaction cost और transport cost का concept हम discuss कर रहे थे. So the transaction costs are not adjusted for for the fair value because these costs are the characteristics of the transaction and not a characteristic of assets or liabilities. Again, quoting example of the stock exchange. If अगर आपको stock exchange के अंदर transaction करनी है through a broker, that means to say then broker automatically will charge you a commission. So that means to say उस transaction का अपना characteristic और transaction करने के लिए वो आपको cost incur करनी पड़ती है. वो asset की amount या asset की value से उसका कोई ताल्लुक नहीं. So उसको हम consider नहीं करेंगे. But if there is a transport cost, significant transport cost that you need to incur, you will be considering the transport cost in determining the and measuring the failure. So this is a concept that need to be understood a bit detailed. So although in a normal situation where you're seeing in a Pakistani market, ये concept आपको इतना ज़्यादा abundantly नजर नहीं आएगा, because normally whenever the fair value is determined, like for example for shares and for securities and bonds and for T-bills and CIBs and those kinds of financial instruments, these costs are because the principal market is here in Pakistan and you're able to kind of relate to what your fair value is. So ना तो आपको यहाँ पे fair value नजर आएगी ज़्यादा, ना आपको यहाँ पे transport cost और transaction cost भी इस तरीके से नजर आएगी. So but there could be a situation where there is a specialized kind of asset, specialized kind of nature of asset where these kind of transport costs could be very relevant in determining the price. इसी चीज को हम डिटरमिन करते हैं, एक सिनेरियो से रिलेट करते हैं. ट्री लिमिटेड इज अ बायोलॉजिकल एसिड कंपनी. इट ग्रोज ओक ट्रीज इन अ टिम्बर प्लांटेशन, जिसको फिर बाद में वो काट के फिर मार्केट में बेचते हैं. तो ओक ट्रीज आर क्लासिफाइड एज बायोलॉजिकल एसिड एंड अंडर IAS 41 these are recorded at their fair value. Changes in fair value are recorded in profit and loss account. T Limited access to the following market. Okay, that means there are 3 markets where it has an access. Markets are Star, Recent and Current. Star market के अंदर annual volume is like 30,000 units. Asian market के अंदर 12,000 units. And also अंदर 6,000 units. Dates per month is 30, 12, 12. Market price Star market के अंदर is 50. Asian market के अंदर 48. Paradox market के अंदर 53. And again transportation cost is 334 and transaction cost is 121. And obviously the net proceed which you'll be getting is 46, 43 and 48. So just अब एक मिनट में आपको देता हूँ. Please take your time to read this scenario and इस scenario को use करते हुए we'll be walking through कि इसके अंदर principal market कौन सी है and what is the most advantageous market and what could be the failure. So I'll be just giving you a minute or two. It's 2:43. एक मिनट बात करें अगली slide पे. So let's move to the next slide. Again, what is the principal market in your opinion? The principal market वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा transactions होती है. Okay, I think most of the guys got it right. It's a market star because it has the greatest volume and the level of performance. And what is the most advantageous market? And I would also appreciate कि आप लोग अपने जवाब के साथ एक लाइनर या just a bit of 1-2 liners. Why do you think it is the most advantageous market? The answer could be this, but why do you think कि ऐसा है कि स्टार मार्केट most advantageous है, crescent
मार्केट मोर एडवांटेजेस है या पैराडॉक्स मार्केट मोस्ट एडवांटेजेस? तो अगेन ये भी सारे लोगों ने सारा जवाब सही गेस कर लिया था. The correct answer is market paradox because it has the highest net proceeds, like currency unit 48. But remember, this is not the fair value. This is fair value will not be based on this market. This is the most advantageous market. The fair value is based on the principal market, to which C Limited has access and it can be identified, regardless of whether the net proceeds can be obtained in an active market. So if you move to the next question. तो पिछले सवाल ये जो मैं एक दो स्लाइड दोबारा जाता हूँ उसमें आखिरी लाइन को जस्ट रीड अगेन एंड reply the question 3. What do you think is the fair value of an oak? It's 46, it's 47, it is 48, it is 40. Answer 57 is 147, there is 49, then 46 and 46 and 46. ठीक है, अगर आप इस it means कि there is a bit sort of a mixed bag. मैं थोड़ा सा अगर ऊपर लाऊं तो which is the principal market is a star. Star is means के star के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा ट्रेड्स है. तो star is a market price and obviously then you look into the transport cost instead. तो अगर आप 50 में से 3 माइनस करेंगे तो it would be 47. So your fair value is the market price less transportation cost. ठीक है, बिकॉज लोकेशन आपका प्लांट की किसी जगह पे थी वहाँ पे आपको ले जाने के लिए उसको यूज करना पड़ा, तो दैट्स व्हाई ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है. एक दो स्लाइड पहले इसको अंडरस्टैंड किया था कि इट इज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ डिटरमिनिंग द प्राइस. ठीक है, assuming that the principal market cannot be identified and fair value is based on the most advantageous market. तो हमने कहा प्रिंसिपल मार्केट को हमने एक सेक्शन के लिए साइड कर रख दिया, प्रिंसिपल मार्केट कोई नहीं है. दैट मींस कि दिस इज द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट assuming के entity has access to that market. So then what would be the fair value assuming के वो प्रिंसिपल है. Our answer is 49. So moving forward, the correct answer is 49. I believe most of you have guessed it right. Because most advantageous market is market paradox, and fair value is the market price less transport cost because location of trade, and obviously this is a market where is getting the most highest amount of the net profit. ठीक है, हम लोगों ने ये तो डिटरमिन कर लिया कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू, अंडरस्टैंड कर लिया. दूसरा कि फेयर वैल्यू कौन सी मार्केट पे बेस होती है, क्या कंसिडर किया जाता है, वो भी हमने कर. बट अगेन द प्रॉब्लम देन अराइजेस हाउ टू डिटरमिन द फेयर वैल्यू इटसेल्फ. लाइक हम कह रहे हैं कि यार उसके अंदर 50 उसकी प्राइस है, 51 प्राइस है, 52 प्राइस है. तो हाउ द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स यू कि फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है. व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस दैट आर अप्लाइड व्हाइल डिटरमिनिंग द फेयर वैल्यू. द स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू करता है. एक चीज दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल
कि अगर एक एक्टिव मार्केट के अंदर कोई प्राइस स्टेट हो रही है, कोई एसेट, कोई लाइबिलिटी, तो जो उसकी कोटेड प्राइस है दैट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द फेयर वैल्यू। अगर वो कोटेड प्राइस है, एक्टिव मार्केट है, then you need to take that price and you need not to move forward. But again, there could be a situation where the quoted price might not be representative, and the quoted price for the asset which you are holding at a particular measurement date, उसकी एक्टिव मार्केट ट्रेड ही नहीं होती या वो वैल्यू आपको नहीं मिल सकती, then you obviously you need to determine how the fair value is determined, और उसके लिए IFRS setting आपको 3 अप्रोचेस देता है। And IFRS setting says that you need to select the approach which is the most relevant in the circumstances and for which sufficient data is available to measure the fair value. IFRS 13 does not mandate you. That means to say that for every asset, you can adopt either of these approaches, either the market approach, income approach, or the cost approach. But जब भी आप approach determine करेंगे, you need to entity need to consider कि आया ये सबसे प्रॉफिट मेथड यही है और डेटा भी इसके लिए अवेलेबल है। जस्ट अ ब्रीफ ऑफ द व्हाट द अप्रोच इज। मार्केट अप्रोच क्या होती है? जैसे मार्केट अप्रोच दैट मीन टू से कि मार्केट की प्राइसेस आप यूज करें। मार्केट प्राइस अप्रोच यूजेस प्राइसेस एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द मार्केट ट्रांजैक्शन फॉर आइडेंटिकल और सिमिलर एसेट्स और लायबिलिटीज और ग्रुप ऑफ एसेट लायबिलिटी। Example of the techniques are fair value of an investment in non-listed securities as determined by reference to the share price of comparable listed entities. Price to earning ratio or subject to adjustment for difference. ठीक है, ये एग्जांपल भी है, बट द मोस्ट सबसे ज्यादा एग्जांपल जो आप मार्केट अप्रोच की जहाँ पे आप सिमिलर एसेट्स का डेटा यूज करके लेते हैं, दैट वुड बी आप इफ यू हैव एन एंटिटी वेयर इट हैज पीआईबी और इट हैज डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट सिक्योरिटीज है, वहां पे व्हाट दे डू कि वो सिमिलर इंस्ट्रूमेंट का आज का इंटरेस्ट रेट लेते हैं, देन दे डिस्काउंट। So that is one of a very good example of the market approach कि आपके मार्केट का ऑब्जर्वेबल डेटा और either it is for the identical asset means कि if मेरे पास आज की तारीख में XYZ लिमिटेड का शेयर है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर XYZ लिमिटेड का जो शेयर है उसकी प्राइस would be the price of an identical asset. Similar asset would be कि if I have an XYZ asset and वो एक सीमेंट कंपनी है and ABC लिमिटेड कोटेड है, XYZ कोटेड नहीं है, दे आर बोथ ऑफ द शेयर एक जितना उनका साइज है, एक जितनी डेट प्रोफाइल है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप XYZ लिमिटेड जो लिस्टेड है उसकी वैल्यू लेके थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके जो भी रीजनेबल बेसिस होगी उसको फिर आप यूज कर सकते हैं। Again, the fair value of the land is determined by the reference to the other land in nearby location with the similar attributes. Like for example, you have a land at a very good commercial location of the city, and you're either वो आपको आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखा हुआ है और either you have taken it as a PPE but you have a revaluation option. So normally what the how the revaluation is done, जो valuers होते हैं they take the value of the vicinity के इस vicinity के अंदर क्या recent transactions हुई। Obviously if you're holding an asset, ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा कि उसी asset की price available होगी। What they do, they take the asset price similar asset आसपास की और फिर उसको एडजस्ट करते हैं कि मतलब लेट्स सपोज दिस इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, यहाँ पे होटल है, दूसरी लैंड खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे गवर्नमेंट का वेबसाइट, उस हिसाब से फिर उसको वो एट्रीब्यूट्स को एडजस्ट करते हैं। दैट इज द मार्केट प्राइस मार्केट अप्रोच, जहाँ पे मार्केट पे काम है। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज अप्रोच फॉर as I said, the land के लिए सबसे यूज होती है, and for your securities and debt and equity securities की वैल्यूएशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होती है, अनलेस कि ऐसी सिक्योरिटीज हो आपके पास जहाँ पे जिसका आपके पास डेटा अवेलेबल ही नहीं हो मार्केट से, देन यू ऑब्वियसली यू रिजॉर्ट टू द इनकम।
इनकम अप्रोच क्या है? एज द नेम सेज के इनकम मींस के ये एसेट मुझे कमा के कितना दे, हाउ मच दिस एसेट इज वर्थ टुडे। तो उसका बेसिक फरमाइश ये है कि एसेट की वैल्यू उतनी ही है जितना मुझे वो फ्यूचर में कमा के दे सकता है। तो इनकम अप्रोच कन्वर्ट्स द फ्यूचर अमाउंट सच एज कैश फ्लोज और इनकम स्ट्रीम्स टू अ करंट अमाउंट एट अ मेजरमेंट डेट। The fair value measurement represents the current market expectation about the future amount discounted to present value. इसमें कंसेप्ट ये है, वही मैं आपको बताया कि एसेट इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न discounted by the time value of money and associated risk. अब मेथड की एग्जांपल क्या है? देयर कुड बी अदर मेथड एज वेल, बिकॉज़ जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, दिस इज द DCF मेथड, तो शायद वैल्यूएशन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मेजर्ड बाय डिस्काउंटिंग द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज आउटफ्लो। जो कैश कितने जनरेट करेगा उसको फिर डिस्काउंट कर दिया जाता है एट रेट ऑफ रिटर्न दैट मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर। जो रेट डिटरमिन होता है दैट माइट बी टू weighted average cost of capital. And again, the second method is multiple price excess earning method that is mostly used for intangible assets or in the business combination. Will say कि ये मेरे पास assets है, इस asset की वजह से मुझे incremental earning कितनी आ रही है, कि अगर ये asset मेरे पास नहीं होता तो मैं कितना अर्न करूँ और asset होने के बाद मैं कितना अर्न करूंगा, तो that is the difference. So I've deliberately given these two methods is that कि ये बिल्कुल different किस्म के assets को cover करते हैं. One is basically the most of the asset would be your discounted cash flows where you are having an investment in unquoted equity as well, और किसी business के अंदर आप invest कर रहे हैं तो फिर आप discount करते हैं. Multiple price earning excess method is mostly used उन assets के लिए जो use होता है कि जो एक ग्रुप ऑफ एसेट्स नहीं है, इट्स लाइक एन एसेट व्हिच यू आपने लिया है एज पार्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो आपने एंटिटी ली उसको इंटेंजिबल एसेट है जो आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई किए हैं और फिर उसको रिकॉर्ड किया है। दैट इज एंड द कॉस्ट अप्रोच इज द थर्ड अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच ये कहती है और ये मोस्टली यूज होती है फॉर द कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड मशीनरी। इस अप्रोच के अंदर नॉर्मली ये लिया जाता है कि उसकी प्राइस आज लेके, तो इस एसेट को अगर हम रिप्लेस करेंगे आज की डेट में तो व्हाट वुड बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ दैट एसेट, एंड देन इट इज डिप्रिशिएटेड टू द नंबर ऑफ यूज जितने एसेट आप यूज कर चुके हैं। लेट्स सपोज यू कि आपके पास एक फैक्ट्री है जो आपने आज से 10 साल पहले ली थी, एक एंटिटी, उसकी वैल्यू आप कराना चाहते हैं, तो वैल्यू और व्हाट द वैल्यू विल डू, वैल्यू विल एस्टिमेट, सॉरी एक्सक्यूज मी, कि आज के दिन इसको कंस्ट्रक्ट करने में विद सिमिलर साइज सिमिलर नेचर ऑफ द एसेट, इसको कंस्ट्रक्ट करने में क्या कॉस्ट इनकर होती है और उसको फिर 10 साल में डेप्रिशिएट करके उसकी वैल्यू निकालती है। लेकिन जब आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे किसी एसेट की प्राइस निकाल रहे होते हैं तो देयर इज वन वेरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट यू नीड टू सी कि उस एसेट मतलब वो एसेट कितना यूज हो रहा है। मतलब एक फैक्ट्री है, अगर वो कैपेसिटी उसकी आज 10% 100% कैपेसिटी पे कभी नहीं चल रहा है, 80% कैपेसिटी पे चल रहा है, 70% कैपेसिटी पे चल रहा है, तो जब भी आप कॉस्ट अप्रोच यूज करते हैं तो एक फैक्टर उसमें जरूर कंसिडर करने की जरूरत है कि उसका ऑब्सोलेंस फैक्टर कितना है, कि कितना मेरा चंक ऑफ एसेट तो कभी यूज ही नहीं हुआ, तो चंक ऑफ एसेट यूज ही नहीं हो रहा तो दैट मीन टू से कि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड नहीं है। तो एक मार्केट पार्टिसिपेंट अगर वो एसेट खरीदेगा तो वो पार्ट ऑफ एसेट वो डिसरिगार्ड कर, so that is one thing that you need to consider when determining using the cost approach, कि इसका ऑब्सोलेंस फैक्टर कितना है या एसेट कितना अपनी कितनी कैपेसिटी पे नॉर्मली चलता है या कितना चल सकता है, मार्केट में डिमांड कितनी है। एक छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताते हैं कि इज द फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट इंटेंशन, दैट मीन टू से कि मैं आई एम द एंटिटी, मेरे पास एक एसेट है, आई एम द मैनेजमेंट,
और मैंने एसेट बेच रहा हूँ, तो उसकी फेयर वैल्यू मेरी इंटेंशन पे डिटरमिन होगी। दैट मीन टू से मैं कह रहा हूँ कि जब तक मुझे ये प्राइस नहीं मिले कि मैं एसेट नहीं बेचूँ, तो would the fair value be dependent upon the management intention? Yes or no? So true or false? अभी वो आतिफ सर सेशन जब एंटर होगा सर आप स्टार्ट कर लीजिएगा उसी विषय का। तो फाइल आपने उसके अंदर खोल दी है, फाइल करनी फाइल है। सर को भी आप शेयर करेंगे जब आप अपना सेशन स्टार्ट करेंगे ना, फिर वो शेयरिंग का चलो option यार है। ये आगे कर देना, मैं इतना वेल वर्स नहीं हूँ इसके अंदर ये। अच्छा सर। ठीक है ना, फिर आप मुझे कर हाँ हाँ सर, वो आईटी का लड़का है, मैं उसको कहता हूँ। हाँ उसको कर दो। Again, ना आप लोगों ने बिल्कुल सबने almost very good answer, correct answer said it's a false because usually market is management, market based and on entity specific your management intention are not available. The second one is the fair value always based on the most advantageous market. ये चीज़ हम पहले आज में डिस्कस कर चुके हैं. Just quick answer from one of you. That would be true or false. I think it's false because it is the prime principal market. It can be identified regardless whether the house profit can be obtained from another market. Again, fair value का basic concept is the fair value is the price that would be paid to acquire the asset. Is it an entry price? Is the statement correct or not? False. Again, I think most of you have got it right. It is an exit price, not the entry price. Exit is a price that would be received to sell assets rather than to acquire. So, are transport costs deducted in estimating the fair value? Yes or no? Okay, let's move forward. To transport costs, those are deducted in estimating the fair value with the location of the purchase to the asset. However, transaction costs, dealer commission, etc., are not assessed. Again, is a depreciated replacement cost a fair value technique that falls under the cost approach? True or false? So, depreciated replacement is a commonly used as a fair value of the specialized plant, machinery, or building or those kind of. But please, जब आप कहते हैं तो keep in mind कि this is one method that cannot be universally applied for everywhere. So it is very selected and very specialized asset के लिए use करता है. ठीक है, एक और concept है कि there are situation where there are certain restriction on the sale of financial assets. कि आपके पास एक asset है और उसमें कुछ restriction है कि आप बेच नहीं सकते या इतने साल तक बेच नहीं सकते या उससे either वो security is not sellable या जो होल्डर है इज नॉट एबल टू सेल द एसेट ड्यू टू सर्टेन लीगल कंसिडरेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है या बैंक है तो बैंक के स्पॉन्सर के पास एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि आप एक्स नंबर ऑफ इयर्स तक वो शेयर सेल नहीं कर. ऑन द अदर हैंड ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नई किस्म का सिक्योरिटी लेती है या कोई नई किस्म की इंडस्ट्री लगा रही है तो वहां पे वो शेयर इश्यू होते हैं. देन वी कैन से कि यार कोई भी है, कोई भी आदमी है या कोई भी शेयर होल्डर है वो इसको 5 साल तक सेल नहीं कर. तो देयर आर टू डिफरेंट कंसिडरेशन वेयर देयर इज अ सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन और देयर इज अ एसेट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन. In a restriction that would transfer the asset in an assumed sale would generally be deemed to be security specific where the price is security. हम बेसिकली कहते हैं कि is a restriction security specific. ठीक है, restriction that are security specific are transferred
when the entity sales entity specific restriction apply only to entity that holds the security. Therefore, they are not considered in measuring the field. ठीक है, security specific है, then you say adjust the price to reflect the restriction. If the entity is not a security specific, then you will need not to adjust the price for a entity specific. कहने का मतलब ये है कि अगर उस एसेट का या उस सिक्योरिटी का अपना इनहेरेंट फीचर ही यही है कि आप जो है वो एसेट सेल नहीं कर सकते या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, फिर वो कंसीडर होगी. बट उसके होल्डर के ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन है, then that restriction is not considered while determining the fair value of the asset. ठीक है, investment acts entity acts as entered into a borrowing arrangement where the securities held by entity का pledge as collateral. उसने लोन लिया हुआ है एंड उसने अपने शेयर्स को एज अ कोलेट्रल, उसकी इन्वेस्टमेंट है उसको एज अ कोलेट्रल रखा हुआ है. But under the loan agreement, entity has a restriction on selling the securities pledged during the period of debt. तो आपके ख्याल में ये एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है और इज इट अ सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन? Answer is the correct answer is entity specific because the pledge is not part of the contractual terms of the security. ये entity ने खुद से लोन लिया हुआ है for its own need and that security has been pledged. So कोई और इन्वेस्टर सेम एसेट ये सेम शेयर होल्ड करेगा तो लाजमी नहीं कि उसने भी pledge दिखाए हो. तो दैट इज बेसिकली अ एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन. जब आप फेयर वैल्यू डिटरमिन कर रहे होंगे तो वो फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन के अंदर उसको नहीं दिया जाएगा. So we have actually discussed what the fair value is, what is the role of the market in determining the fair value, how transaction costs and transportation costs are considered, and also what are the fair value techniques and what are the restrictions that are taken care. But then again, जब भी आप मार्केट वैल्यू डिटरमिन करते हैं, fair value of the market approach, cost approach और income approach, IFRS 13 requires to categorize your fair value into different hierarchies. Or this is a very most important concept in IFRS 13 as well, because fair value hierarchy किसी भी financial instrument की या किसी भी security की या किसी भी asset की या किसी भी liability की complexity को determine करता है कि जितना complex fair value determination के अंदर आपने assumption use की होंगी उसकी hierarchy उतनी बड़ी होगी. Like for example, अगर आपके पास एक शेयर है और वो मार्केट आप XYZ कंपनी का शेयर है वो मार्केट में लिस्टेड है, आपने मार्केट से उसको उठा लिया, तो दैट विल बी योर लेवल 1 फेयर वैल्यू हायरार्की के बिल्कुल किसी भी मतलब आपने ऑब्जर्वेबल इनपुट लेके ले लिया, तो एसेट की वैल्यू लगा ली उठा ली, तो दैट इज अ फेयर वैल्यू लेवल 1. लेवल 2 इज आपने ऑब्जर्वेबल इनपुट ली और उसके अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके अपनी फेयर वैल्यू निकाली, दैट वुड बी द लेवल 2. Level 3 is where you do not have much observable input. Entity ने assumptions लेके significant judgment assumptions लेके उसकी fair value determine किए, तो that will come under the fair value hierarchy level 3. But standard आपको require करता है कि आप वो fair value techniques use करें जो ऑब्जर्वेबल इनपुट को मैक्सिमाइज करें. जितनी भी आप assumption यूज करें जो मार्केट में सबसे ज्यादा है, जो मतलब आपको इजीली रेफरेबल है, those should be preferred. Should be avoided जो unobservable market inputs. But there are situations where you have to resort to unobservable conditions. So
ठीक है, इसको हमने गो थ्रू कर लिया कि लेवल 1 इज 1. लेवल 1 होता क्या है? लेवल इज अनएडजस्टेड कोटेड प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट, जहाँ पे आप एक्टिव मार्केट से इनपुट लेके उसको विदाउट एनी एडजस्टमेंट यू यूज. फॉर एग्जांपल के कोटेड प्राइस ऑफ अ शेयर दैट इज एक्टिवली ट्रेड on the stock exchange, but indication fair value is the quoted price in the active market. That is the level 1 input, which is the most easiest one to apply and most preferred one in the sense. अगर आपको लेवल 1 से कोई इनपुट मिल सकती है तो यूज दैट, डोंट गो बियॉन्ड दैट. लेवल 2 इज कोटेड मार्केट में आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके उसको नीचे लेके आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 years बैक आपने एक बॉन्ड पीआईबी खरीदा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी विच कैरिड 18% इंटरेस्ट, लेकिन आपने आज उसकी फेयर वैल्यू निकाली. So that means to say that that is your asset which has a interest rate. But आज अगर कोई मार्केट पार्टिसिपेंट इन्वेस्ट करेगा किसी भी सिक्योरिटीज में तो वो आज के इंटरेस्ट रेट के मुताबिक इन्वेस्ट करना पसंद करेगा. तो देन यू से कि यार मेरे पास 2 साल पहले उसका टेन्योर 10 ईयर था, आप वो आज 8 साल है. देन यू से कि ऐसा 8 साल का पीआईबी आज मैं इशू कर रहा हूँ, जब गवर्नमेंट इशू करी वो अवेलेबल है 8 साल का टेन्योर का. देन यू से कि ऐसा 8 साल का नहीं है, दैट मीन टू से कि वो फिर आपका रिमेनिंग टर्म तो आउट होगा. देन यू से कि 8 साल के आसपास का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है. लेट्स सपोज इट इज 90. देन यू एडजस्ट इट टू द रिमेनिंग फेयर वैल्यू. आप कहते हैं यार 9 साल का जो रेट है उसका 19% है, जो 8 साल के आज के रेट पे 18.5 है. वो इंटरपोलेशन टेक्निक्स होती है यूज करके देन यू डिटरमिन दैट इज समथिंग या मार्केट ऑब्जर्वेबल इंटरेस्ट रेट लेके आपने उसको डिस्काउंट या उसको यूज किया है विद a little adjustment or some kind of adjustment. लेवल सी वो है कि जहाँ पे आपके पास कुछ ज्यादा इनपुट के लिए अवेलेबल नहीं है एंड यू आर यूजिंग योर ओन assumption. लाइक फाइनेंशियल फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है, उसको आपको कितनी पे डिस्काउंट कर रहे हैं, व्हाट इज द डिस्काउंट रेट दैट यू. सो द मोर अनऑब्जर्वेबल इनपुट दैट यू आर गोना यूज, उसका लेवल बढ़ता जाएगा. और जैसे जैसे लेवल किसी भी फाइनेंशियल किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू का हायरार्की बढ़ती है, उस हिसाब से उसके डिस्क्लोजर भी इंटेंस और इंक्रीज होते जाते हैं. ठीक है, जस्ट जो पिछली था उसका ब्रीफ ठीक है कि द कोटेड मार्केट फॉर आइडेंटिकल एक्टिव मार्केट, यस क्या प्राइस एडजस्ट कर रहे हैं नहीं. जस्ट लेवल 1 है एडजस्ट हो गई तो इट विल बी आइदर लेवल 2 और लेवल 3. तो छोटी सी आपने एडजस्टमेंट की है लेवल 2, उसके बाद अगर आपके पास any significant unobservable input है, those are significant, then it will be placed into a level 3 hierarchy. ठीक है, एग्जांपल तो जस्ट मैं वही चीज रिपीट करूंगा जैसे बात की थी. स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, एक्चुअली ट्रेड हो रही है, दैट्स अ लेवल इनपुट. ऑफिस बिल्डिंग है, valued using the price per square meter for the building type for the pricing in observed transaction involving the similar building in the similar location. तो आपने कहा कि ऐसा मेरे साथ हमसायों ने तो ये इतना रेट पे किया, मेरा भी तकरीबन वैसे ही लेंगे तो मेरा भी उतना ही होना चाहिए. दैट इज अ लेवल 2. Level 2 input is investment property valued by the valuation firm taking into account current and expected rental yield, plant or factory used to produce construction material based on depreciated cost. So these would be the one that will be placed into a level 3 hierarchy. Income approach would be in most cases be level 3 because income approach के अंदर आप ये determine कर रहे होते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि क्या cash flow inflow outflow है. In most cases income approach would be level 3. But there could be cases where there are very rare situation where जहाँ पे किसी भी एसेट की इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, देन यू नो कि इसका फ्लो ऑफ कैश फ्लो कैसे होगा कैश फ्लो से, देन इट कैन बी लेवल 2. बट इन मोस्ट केसेस it will fall under the level 3 hierarchy. And as
as an application of the IFRS 13 and as a reviewer, the most important and the most difficult to apply is the level 3, जहाँ पे आपको इनपुट की रीजनेबलनेस देखनी पड़ती है, appropriateness of the measurization देखनी पड़ती है, जो डेटा इनपुट लेवल 3 सिग्निफिकेंट अनअवेलेबल इनपुट के लिए दिया गया है, वो उस डेटे की एक्यूरेसी भी देखी जाती है. So again, if you this is thing and आपने level 1 level 2 में देखी and how to measure the fair value. ठीक है, fair value के अंदर there is one another concept which is also very important, is the highest and the best use. Highest and best use का मतलब ये है कि वो asset उसकी fair value वो है उतनी ही होनी चाहिए उस एसेट की फेयर वैल्यू वही होनी चाहिए जो आप उसको उसके बेहतरीन इस्तेमाल में लाके यूज कर सकते. बेहतरीन इस्तेमाल में लाने का मतलब ये है कि लेट सपोज आई हैव अ लैंड पीस ऑफ लैंड जो मेरे पास अभी एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ लैंड में मौजूद है. एंड वी ऑल नो कि एग्रीकल्चर लैंड इज नॉर्मली प्राइस लोअर देन द नॉर्मल लैंड. लेकिन मुझे पता है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट को अप्लाई करूंगा और थोड़ी अप्रूवल होगा, देन आई कैन कन्वर्ट दिस लैंड इनटू अ कमर्शियल लैंड और एन इंडस्ट्रियल. दैट इज इट इज फिजिकली पॉसिबल भी है, लीगली पॉसिबल भी है और फाइनेंशियली फीजिबल भी है कि मुझे ज़्यादा इसके अंदर खर्चा नहीं करना पड़ेगा. मुझे एप्लीकेशन देनी है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को कन्विंस करना है कि कंपनी and maximize value, then you will be valuing your land not on the basis of agriculture. If it is possible to convert it into a commercial land or an industrial land, then उसकी fair value उसके highest and best use की basis पे ही determine. But you need to consider कि उसका जो highest and best use है, is it legally permissible, financially feasible, जो maximum value करता भी है, और then you consider it कि highest and best use पे उसको दिया जाना चाहिए. Again, I think in the interest of time, we have just covered most of things. ये मैं पिछली slide में already covered that कि financially feasible क्या है, legally permissible है कि नहीं है, financially feasible, maximize value. ठीक है, just a quick question. NTTV has a recently discovered deposit of rare mineral under its lime tree forest. The land on which lime tree forest is measured at the fair value in the financial analysis. Currently, the land is zoned for the agricultural use and could not be exploited for the purpose of mining. The mining beneath the land, however, buyer the land could apply for the land to be rezoned, and which will the make it more valuable. यही चीज हमने अभी डिस्कस कर ली है, हमने बता भी दिया कि अगर वो चीज हो सकती है, फिजिकली पॉसिबल एंड व्हिच इज लीगली परमिसिबल, देन यू विल बी यूजिंग दैट. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर इसको कर सकते. ठीक है, इनकम अप्रोच में एक सवाल था कि आप टाइम होराइजन कौन सा लेते हैं. तो नॉर्मली अनलेस द प्रोजेक्ट इज टाइम स्पेसिफिक, जब आप कैश फ्लोज ले रहे होते हैं, एक जनरल assumption होती है कि इट विल बी द एंटिटी विल बी ऑपरेटिंग इन अ परपेचुअल. दैट मीन टू से कि आप 5 साल के नॉर्मली 5 साल के कैश फ्लोज लेते हैं, देन यू अप्लाई, देन यू डिटरमिन द टर्मिनल वैल्यू बेस्ड ऑन द presumption के these cash flows will be carried forward on a perpetual basis or recurring on a perpetual basis. ठीक है, this is something that I'm gonna skip. Now we have covered the fair value होती क्या है, how it is determined, what are different techniques that we use, and then obviously what kind of disclosure that we required to be given. तो IFRS 13 normally आपको कहता नहीं है कि ज़्यादा disclosure किस तरह के दिए जाए. Mostly those standard that are required require you to measure the fair value. वहाँ से primary
डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आती है, लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पे वैल्यू की डिटर्मिनेशन आपको डिस्क्लोजर IFRS 7 के साथ है, बट IFRS 13 आल्सो बट रिक्वायर यू टू कि आपने फेयर वैल्यू को कैटेगराइज करना है कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, देन इफ इट इज लेवल 2 एंड लेवल 3 then you need to give the input कि क्या input choose हुई है, but for level 3 you need to explain the input in detail and also you need to देना है कि वो how sensitive your fair value would be to change into the uh, those significant unobservable input. हाँ मैंने skip इस तरह की कि that was just examples and we have already gone through that. So I've just skipped it in the interest of time because already we have taken a 20 minutes. So it was just a reiteration of the slides. So that's why we done that. We can take 2-3 minutes if you have any question. हम उसको ले जाते हैं. Then obviously if you don't have any question, I'll just take leave. किसी का कोई सवाल है? I'll be sharing the slide with the ICAP and maybe then they can share it with you. वो तो हो जाएगी. ठीक है. The category means के आपकी जो एसेट है वो किस कैटेगरी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मौजूद. इज इट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इज इट अ लैंड, इट इज अ बिल्डिंग, इट इज व्हाट. तो वो किस कैटेगरी किस कैप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट लाई करता है, तो कैटेगरी से वो मदद करा. The question is when we use the price earning ratio of a listed company for equity valuation of any private company for same kind of business, it is level 2 or level. Actually it will depend कि आपने किस तरह की उसके अंदर एडजस्टमेंट दी हुई है. If you have taken the price earning ratio of listed company और उसके अंदर एक थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके उसको आपने एक अनकोटेड सिक्योरिटीज की वैल्यू निकाली हुई, then obviously it will be level 2. But if you have determined कि ऐसा मेरे पास this kind of entity is not present in Pakistan, you are using a price earning ratio of a quoted entity outside Pakistan and then you have taken assumptions कि पाकिस्तान के अंदर ये entity operate कर रही होगी, तो किस तरह की price earning होगी, so that will obviously be then covered into level. So if you have any other question, please एक आध मिनट हम वो ले सकते हैं. If not, then thank you very much to all of you for listening to my presentation in a very patient and understanding way. Again, I think equity versus security distinction is that if there is a, for example, मेरे पास एक securities है, shares है ABC Limited की, या और मैंने उसको कोलेटराइज कराया हुआ, मैंने लोन लिया हुआ है और लोन जो है वो मुझे कहता है कि ये एसेट जो है वो ये शेयर आपने जब तक मैं लोन रीपे नहीं करूंगा आप ये शेयर बेच नहीं सकते. So that is an entity specific restriction. That means to say कि since the entity has taken a loan, so that from where that this section comes. ठीक है. सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इज लाइक दैट. इसकी एग्जांपल मैं आपको क्यों दे सकता हूँ कि सिक्योरिटी के साथ इसको थोड़ा बढ़ा लिया जाता है. So let's suppose you have a land and government says that the land can only be used for development of a hotel, not something like that. कुछ और आप उसमें काम नहीं कर सकते, सिर्फ डेजिग्नेटेड काम ही कर सकते. So whenever then you determine the fair value, तो उसकी fair value determine होगी कि कोई और पार्टी जो होटल बनाने में इंटरेस्टेड है वही उसको देगी, तो उसकी fair value भी उसी तरीके से determine होगी और वो वाली restriction fair value के determination के अंदर कंसिडर की जाएगी. So that is a security और asset specific restriction के उस asset को कुछ कर नहीं सकता. I hope I made clear. Ale, what is the difference between Visual IFRS 13 and the Visual as per specific standard? IFRS 13 आपको जनरल गाइडेंस देता है कि आपको इसको में कवर क्या क्या करना है, but the
standard specific disclosure or regulation specific disclosure might ask you to give a further disclosure as well. Like for example, अगर आप course schedule, reference schedule of the company act की बात करें, in the case of property valuation, it says कि आपने बताना है कि मेरी valuation कब हुई, मैंने कौन सा value use किया, and what is the force and value of that. IFRS 13 says कि आपने वो बताना है कि value किस category में दी, which is actually IFRS 13 के disclosure किसी ऐसे specific नहीं है, वो is generally applicable to all the fair value valuation. But the standard then says you can have a specific disclosure in addition to what that may be. I think anonymous attendee, this question is a bit complex. Maybe you can contact me separately and I can discuss. And obviously, this is something that would require a bit more understanding of the subject. So you can contact me and then we can discuss some of these things. It's something very specific and may not be answer of this topic. If giving disclosure as per IFRS 13, that may not need to give disclosure as per specific IFRS. I'm afraid not. If you're giving disclosure IFRS 13 and the specific standard required, you need to cover both of these. Not you cannot say that इस standard का मैंने disclosure दे दिया है तो इस वजह से मुझे standard specific standard का disclosure नहीं देना. For every standard that is applicable include IFRS 13, you need to give disclosures that are required or if it is material. ठीक है जी, I think it's all done. तो इसके अलावा कुछ और भी है. I think this is my email address. आप लोगों को कोई और सवाल करना है या something like that, you can reach out to me on this email address. Okay, then I go out. Thank you so much and Allah.